Okay guys, now I'm making a new video guys. Okay, so please look here. Triangle PQR is right angle at Q. So guys, this is first view triangle PQR, but this is not the main view because there are different type of triangles. So this gives us the main view. It is right angle at Q. So guys, in this triangle PQR, he clearly said in triangle PQR, this angle Q is right angle. So this is the main view. जैसे मैंने ये पढ़ा guys, मैंने डायरेक्ट ट्राइंगल बना दिया PQR. ठीक है, in triangle PQR, PQ is right angle. Given that PQ is x centimeter, so this is PQ. Side QR is x plus 2 centimeter and side PR is x plus 4. Guys, in right angle triangle, the longest side is always hypotenuse. Why this is hypotenuse? Because इससे तीन साइड दी x plus 2 and x plus 4. Suppose if I said this x is 4. Guys, 4 plus 2 is what? 6. If this is 4, 4 plus 4 is 8. So this is the longest side. And you know that in right angle triangle, the longest side, which is opposite to 90 degrees hypotenuse. So guys, when you substitute these values, always remember PR is hypotenuse. Why this is hypotenuse? Hypotenuse being the reason, and this is the longest side. So look here guys, triangle PQR. Okay, तो सबसे पहले 90 डिग्री पे मैं हमेशा हाइपोटेन्यूज को लेबल करता हूँ. So he clearly said PR is hypotenuse. PR is the longest side. So guys, PR is x plus 4 centimeter. This is x centimeter, and this is guys x plus 2 centimeter. Okay guys, so he said find the value of x. तो x find करने के बाद हमारे पास different option होते हैं. Number 1, the formula of perimeter. Number 2, the formula of area. But in this case, no perimeter given, no area given. All the formulas are extended in equation. तो अगर perimeter देता तो perimeter के फॉर्मूले में डाल के equation बना देते, area में substitute. But this time, no area, no perimeter given. Only the three sides of a right angle triangle given. You know that guys, in right angle triangle, the three sides are Pythagoras theorem में बताया था. He tell us the Pythagoras theorem prove for us that the side opposite to 90 degree, this side is hypotenuse, the longest side, and the two sides are called shorter side. तो hypotenuse की पहचान थी, it is always opposite to 90 degree, it is the longest side, always opposite to 90 degree. And guys, the two shorter side forming 90 degree, ये दो side जो 90 degree बना, this are base and perpendicular, and this is hypotenuse. Guys, this is base and this is perpendicular. तो guys, आप इसको यूँ कह सकते हो, you can also call this base and this perpendicular. Base और perpendicular आप switch कर सकते हो, change कर सकते हो एक दूसरे की जगह, but hypotenuse will remain same, the side opposite to 90 degree. Okay guys, तो he said the find the value of x. तो guys, हमारे पास सिर्फ एक reason बचा है. We know that whenever we finding the sides, Pythagoras theorem मैंने बताया था when and how. When मतलब when we apply Pythagoras theorem, whenever we finding the sides of a right angle triangle. Why? Because Pythagoras theorem is a relation between the three sides. Pythagoras discovered the relation between the three sides. और guys, वो relation क्या था? The relation was hypotenuse square is equals to sum of the square of the two shorter side. The shorter side is base square and the other shorter side is perpendicular. So guys, we discovered the very important relation. वो relation क्या था? वो relation ये था कि उसने एक तीनों sides का relation बताया था. वो relation को connection क्या था? That square of the longest side. जब इस longest side का हम square निकालेंगे, तो ये square हमेशा equal होते हैं sum of the square of the two shorter sides. Sum of the squares of the two shorter side base and perpendicular. So guys, whenever we finding the sides of a right angle triangle, but this time we are finding x, and x is what? X is using in the sides of a right angle triangle. All three sides are given in term of x. So guys, all three sides are given, but not the original in term of x. और वो कह रहे हैं हमसे find the value of x. So guys, x being given apply Pythagoras theorem. First of all, hypotenuse. तो guys, hypotenuse ये mistake सबसे ज़्यादा थी कि hypotenuse की जगह base और perpendicular. Hypotenuse what? The side opposite to 90 degree. This side opposite to right angle. So guys, hypotenuse is x plus 4, then square, then equals to as it is, then base. तो guys, आप base इसको बना लो, कोई फर्क नहीं. तो base is guys x plus 2 square, then plus, then perpendicular. Perpendicular is here guys x, और perpendicular के bigger square. Okay guys. Okay. So जैसे ही हम value substitute करेंगे, value substitute all the three side in term of x, all the three side in term of x,
you get an equation, you get a formula. तो guys we know that जब हम equation solve करते हैं हम दो चीज़ों को ख्याल करते हैं. अगर equation में fraction है, first of all क्या होगा fraction खत्म करो. अगर equation में brackets है, open the bracket, expand the bracket. तो guys हमें bracket खत्म करनी है. कैसे bracket खत्म करेंगे? We will open the bracket. और अगर आपको याद हो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था? expansion. expand का क्या मतलब था? expand always mean open the bracket. तो guys there are two type of opening bracket, there are two type of expansion. Algebraic identity and rainbow method. This time identity is applicable guys. तो कैसे identity लग रही है? कौन सी identity लग रही है? अगर आप गौर से देखो तो guys the identity is a plus b whole square of the sum of two terms. तो guys अगर आपको याद हो इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला आता था a स्क्वायर इसका हम इस जब भी आइडेंटिटी लेते हैं इसका रिजल्ट यूज करते थे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो यूज द रिजल्ट. ओके गाइस इफ यू लुक हियर वेरी केयरफुली इसमें भी आइडेंटिटी लग रही है गाइस. व्हिच आइडेंटिटी? सेम आइडेंटिटी स्क्वायर of the sum of two terms. So the first term of is considered a, the second term is considered b. The first term is a, the second term is b. Guys इसका भी आंसर सेम था. आंसर क्या था? The answer is a square plus 2ab plus b square. Then plus इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही तो square mean x is multiply x, so x into x is x square. So guys plus x square means c. Okay guys. Now guys down. A, what is A guys? A is x. So instead of A, we will substitute x. So A के ऊपर क्या guys? Square plus 2a and b. So what is A guys? The first term is considered A. A is x and b is 4 plus b square. So guys, what is b? B is 4. The 4 square equals to as it is. Then again, A in this bracket A is what guys? Again x. So A square plus 2ab. So guys, A is x and this time b is 2 plus b square. B is 2 square. This x square remains same. Okay guys, so finally it becomes x into x is x squared, 2 4s are 8x plus 4 4s are 16. So guys we know that जब भी हम bracket open करते हैं, bracket expand करते हैं, we get separated. terms आ गई, तो check term कहते हैं the same term. None of them are same. ना ये same है ना ये same है. Same term मतलब variable in power same, तो variable in power. So guys ये further solve करनी है. Come to this one. x into x squared, 2 2s are 4x plus 2 2s are 4. This 2 2s are 4 plus x square. So guys now look here. इसमें same term है. This and this are same term. So guys I'm writing here. Just hold on guys. I'm writing this again. So x square plus 8x plus 16 remains up because there is no same term. X square plus 4x plus 4 plus x square. So look here. This and this are same term. So we will get the same term. So x square plus 8x plus 16 equals to x square plus x square plus 4x plus 4. Guys, these are the same term. X square remains same plus 8x remains same plus 16 remains same plus sign of economic equal to 2x square plus 4x plus 4. तो guys we know that जैसे ब्रैकेट ओपन होता है, जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं हमें एक चीज पता लगती है कि which type of equation is this. तो guys जैसे हमने ब्रैकेट ओपन किया हमें पता लगता है this is a quadratic equation. Variable with biggest power square, variable with biggest power square, variable with biggest power square. तो guys this is a quadratic equation. तो आपको याद है quadratic equation का फॉर्मेट. quadratic equation में हम दो मेथड करेंगे. फैक्टराइजेशन जो आप कर चुके हैं एंड जनरल क्वाड्रेटिक फार्मूला. दोनों मेथड के लिए जरूरी है कि आपको पॉजिटिव क्वाड्रेटिक टर्म मस्ट बी नेगेटिव. आपने क्या करना है इस तरह अरेंज करना है. पॉजिटिव क्वाड्रेटिक linear constant and other side is equals to 0. We need this thing quadratic term 100% positive. ये positive और negative और चलेगा, ये positive और negative और चलेगा, and other side is 0. तो these two are very important कि we need quadratic term positive and other side is 0. इसको कुछ टीचर यूँ भी सिखाते हैं ax square. ये a क्या है मैं बाद में समझाऊंगा. then plus minus bx plus minus c equals to 0. ओके गाइस, तो आपको ये फॉर्मेट याद है. पहले मैं ये बता रहा हूँ क्या है. तो हम क्या करेंगे, हमें दूसरी साइड 0 बनाने के लिए या तो ये तीनों शिफ्ट करनी है. अगर गाइस आपने इसको शिफ्ट कर दिया तो फिर व्हाट विल हैपन, x स्क्वायर दिस इज प्लस 2x व्हेन वी शिफ्ट ऑन द अदर साइड साइन प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गया गाइस माइनस x स्क्वायर. वी नीड पॉजिटिव क्वाड्रेटिक ऑलवेज. तो दिस इज रॉन्ग. व्हाट वी विल डू गाइस, विल नॉट शिफ्ट दिस वन. हम इन तीनों को शिफ्ट करेंगे. Instead of this we will shift this one, we will shift this one, we will shift this one. So look here guys, this 2x square remain here plus x square when you shift on the other side it become minus x square. Okay, इसको shift किया then plus 4x remain here. This plus 8x when we move on the other side it become minus 8x.
This plus 4 remains same here guys. जब हम plus 16 को वहाँ शिफ्ट करेंगे it become minus 16. Okay guys, so we get the same term. This is same term. This is same term. This is same term. And guys here we have left 0. कोई भी एक साइड 0 बना है. तो guys ये 0 हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं. 0 दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं because 0 is a neutral digit. It has no sign. तो look here guys, plus minus minus sign of bigger number. ये हमारे पास आ गया x square. Plus minus minus sign of bigger number. ये हमारे पास आ गया 4x. ओके गाइस, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ बigger नंबर ये आ गया हमारे माइनस 12. तो अब ये 0 आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये 0 यहाँ पे भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो गाइस वी गेट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक, वी गेट लीनियर कांस्टेंट, अदर साइड इज इक्वल. ये प्लस और माइनस और चलेगा, ये प्लस और माइनस, बट दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस साइड इज इक्वल टू 0. ओके गाइस, तो नाउ वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. अब गाइस आज मैं आपको जो मेथड सिखा रहा हूँ, मैं मेथड सिखाने जा रहा हूँ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. This is general quadratic formula guys. X जब भी हमें x फाइंड करना है तो जनरल quadratic formula है minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. Now in this formula I am using three letters a, b and c. अब what is a, what is b and what is c? Guys what is a, what is b and what is c? तो guys a क्या होता है? A is always the coefficient of the quadratic term. B is always the coefficient of the mean. तो A क्या होता है? Always the coefficient of quadratic term. X square में जो coefficient होता है. तो what is coefficient here guys? 1. तो this is A. Then come to B. B क्या होता है guys? हमेशा the coefficient of the linear x. तो linear x ये ना. This is linear x. The coefficient of the linear x. ये plus भी हो सकता है minus भी. Guys what is B? B is x. Is it clear guys? तो B is minus 4. Then what is C guys? C क्या होता है? C क्या होता है? The coefficient of the constant term. Constant term mean the fixed number without any variable. Guys, look here. So C is minus 12 equals to 0. It plus भी हो सकता है minus. So guys, we get A and B. What is A? Always the coefficient of the x square. X square का coefficient है 1. What is B? The coefficient of x. What is x guys? Coefficient is minus 9. What is C? No x. Fixed number, constant value minus 12. So guys, we get A, B and C. Now we put A, B, C in the formula. तो फाइव गाइस हमें x मालूम करना है तो उसके लिए फॉर्मूला माइनस b. तो लुक हियर गाइस प्लस माइनस फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4a एंड c अपॉन 2a. गाइस नाउ वी सब्स्टिट्यूट a b and c. तो व्हाट इज b गाइस? b is minus 4. तो वी पुट हियर इंस्टेड ऑफ b minus 4 then plus minus of 1 square then b square. तो गाइस व्हाट इज b? b is minus 4. minus 4 minus 4ac. Guys, a is what? 1. Then putting 1. Then c. So guys, c is what? Minus 12. Then putting minus 12. 2a. A क्या guys? 1. So now guys, what is before bracket? Before bracket minus. And we open the bracket. तीन condition है. Different conditions out of the minus minus. This become plus 4 plus minus. Then minus 4 square का मतलब होता है guys. This square mean minus 4 is multiplied by minus 4. So minus minus is plus. 4 4 is 16. Okay guys. Then this minus with the minus 4ac. ये सब multiply. तो multiply में we noted first of all we multiply sign. This minus and this minus. Minus minus plus. 4 1s are 4. 4 12s are 48. Upon 2 1s are 2. Okay. So 4 remains same. Plus minus remains same under. So 16 plus 48 is like 64 upon 2. Got the clear? Now guys, what is square root of 64? The square root of 64 है 8. तो guys ये 8 एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव. क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि जब भी हम स्क्वायरिंग करते हैं when we do squaring the result is always positive. When we do squaring of positive number the square result is always. तो guys चाहे नेगेटिव 8 का स्क्वायरिंग करो it always 64. चाहे पॉजिटिव तो जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट हम एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में. दैट्स व्हाई प्लस एंड माइनस. तो लुक एट गाइस 8 plus 4 upon 2 एक बार पॉजिटिव में ले लिया एक बार हम ले लेंगे नेगेटिव 8 upon 2. दिस 4 remains same एक बार पॉजिटिव 8 2 remains same एक बार नेगेटिव. तो प्लस 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 इट बिकम 12 upon 2 which is equals to 6 plus minus minus sign of bigger number it become 2. So it become guys minus 2. So guys I hope you get the concept. Thank you Raju bhai. Thank you.